Hi students, so welcome to our class today. So today we will be discussing some vocabulary words. So we'll be checking you. I'll be giving you sometimes hints, otherwise direct questions, and you have to answer them. So let us check how much well prepared you are. I have segregated it into different ways. तो root words भी हैं यहाँ पे contextual meaning भी आपको देखना पड़ेगा. तो let us begin. So welcome to our class today. This is Danish Ali. चलिए, here comes your first group. Segregate, sequester, secede, sedition, seduce. इनमें से किस किस का मीनिंग आपको पता है? Quickly, how many of these words know? चलिए, तो देख लेते हैं इसको. ये सारे के सारे वर्ड्स हैं रिलेटेड टू द रूट वर्ड एस ई, विच मीन्स अपार्ट या विदाउट. So you have this segregate. यहां से segregate मतलब to separate. So you have segregated populations. जैसे कि नाजी जर्मनी के अंदर the Jews they were segregated. उनको अलग कर दिया गया था. You have sequester, isolate और hide away. तो जैसे अगर आपने वो मूवी देखी हो लाइफ ऑफ पाई, है ना, तो उसमें द प्रोटागोनिस्ट द हीरो ही वॉज सिक्वेस्टर्ड ऑन अ बोट along with a lion or a tiger, I think tiger. Secede, withdraw formally from membership. Secede, जैसे कि यहाँ पे अभी ये जो यूक्रेन रशिया प्रॉब्लम क्यों चल रही है, बिकॉज रशिया क्लेम्स दैट सर्टन पार्ट्स ऑफ यूक्रेन दे वांट टू secede, दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम यूक्रेन, इसीलिए रशिया उनको हेल्प कर रहा है. सेडिशन, सेडिशन इज जो हमारे चार्जेस लगते हैं रिबेलियन के कि यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द कंट्री, वो हो जाता है. तो सेडिशन चार्जेस ऑन मैनी पीपल. सो वो है सेडिशन, रिवोल्ट, रेबल राउजिंग, लोगों को भड़काना कंट्री के अगेंस्ट या कंट्री की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दैट इज सेडिशन. सिड्यूस, जो टेंटलाइज हो जाता है एकदम हटके, तो इट कुड बी अ women trying to seduce a man to take her somewhere apart without anybody else. वो उस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं. सो ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम. ठीक है. हेलो पिंकी. So sedition, segregate, seduce, you were knowing. Any sentence with these words? Can you quickly make a sentence? Any word? And then we'll move on to the next word, next set. Horror, shudder, कांप जाना. Stand on end, जैसे बाल खड़े हो जाते हैं ना डर के मारे. So that is from horror. So जो horror वाले सारे आ जाते हैं आपके पास. Horror, horrible, horrendous, horrify, horrid. All of these, they are synonyms having the same root, or. So from one root, you can learn all these words. This chapter is segregated into four parts. Is separated, यहाँ पे segregated जो दूसरों से हटा के कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इतना अच्छा यूज नहीं होगा अर्शी. इट विल बी दूसरों से हटा के जो आप कर रहे हो. चलिए, अब यहाँ पे कंटेक्चुअल मीनिंग आपको मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंटेक्चुअल मीनिंग. ये पैसेज पढ़ के यू विल हैव दीज ऑप्शंस, यहाँ पे आपको मैच करना रहेगा. सो क्विकली रीड द पैराग्राफ. ये जो वर्ड्स आ रहे हैं उसके फिर यू हैव टू जज द मीनिंग.
Once you read, tell me, so I will move on to the questions. Hi, Vijaya. Have you read? Should I move to the questions? चलिए, I think this much time is sufficient. So now try to judge the meaning from what you have read just now. Whatever words you are able to match, send it to me. कुछ बना पा रहे हो आप? किसका क्या मीनिंग हो सकता है यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ देम यू आर एबल टू जज? चलिए, थोड़े से मैं हिंट दे देता हूँ। प्रोफेनेशन हो जाता है हमारे पास कि कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो कि दूसरे के लिए इंसल्टिंग हो। इसको जो हिंदी में हम बोलते हैं गालियां देना, वो भी हो जाता है प्रोफेनेशन, या कुछ भी किसी की इंसल्ट कर देना। सो दैट विल बी जे। Usage of abusive derogatory language to harms one's respect, blasphemy. So जैसे कि the cricketer was hurled with many profanations by the audience when he could not perform well. ठीक है, हु इज अ मिसक्रिएंट? मिसक्रिएंट ऐसा हो जाता है जो जैसे किसी की कार में तोड़ फोड़ कर दी या कुछ और लोगों को परेशान करता है। सो दोज आर मिसक्रिएंट्स, वो लोग जो कि कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। सो आई, so for example, the miscreants, they broke the street lights. Yeah, some plants, some potted plants were put on the road, but some miscreants, they damaged it. Maelstrom, जो सिंपल हिंदी में हम बोलते हैं भंवर। नदी में जो भंवर उठता है ना गोल गोल, वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। सो दैट इज मेलस्टॉर्म। तो वो एक्चुअल भंवर भी हो सकता है। सो द बोट कैप्साइज्ड इन द मेलस्टॉर्म, या जब कहीं ऐसी सिचुएशन में आप उलझे हुआ हो जिससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, सो उसको भी हम बोल सकते हैं मेलस्टॉर्म। सो फॉर इंस्टेंस आई कैन से दैट this competitive exams, many students are caught in this maelstrom. Some of the students, they come out winners, and others, they are not able to get to their desired college, and they feel they are stuck in this maelstrom to get a good college or a good job. So whirlpool भी कहते हैं उसको। So that is maelstrom. व्हाट इज फियास्को? फियास्को हमारे पास हो जाता है कि आप कोशिश कर रहे हो जिसमें टोटल फेलियर, बिल्कुल ही आपका
कामयाब नहीं हुए हो. सो फॉर एग्जाम्पल, they were trying to find the kidnapped child, but their attempts ended in a fiasco. मतलब वो कामयाब नहीं हुए उस kidnapped child को ढूंढने में. So that will be fiasco. So an embarrassing failure, debacle. Bastion जो हम बोलते हैं हिंदी में गढ़, वो हॉकी का गढ़ है, वो कांग्रेस का गढ़ है, वो बीजेपी का गढ़ है, उस सेंस में हम जो बोलते हैं तो दैट इज बेस्टन, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. वैसे बेस्टन जो है उसे किला भी बोला जाता है, तो इसलिए उसको हम बोल देते हैं कि दैट इज अ बेस्टन. सो दैट शुड बी, कौन सा हो जाना चाहिए यहाँ पे, विच नंबर? यस, एफ. प्लीथोरा कुछ बहुत एक्सेस ऑफ समथिंग, जरूरत से ज्यादा कुछ चीज जब हो जाती है, सो दैट इज प्लीथोरा. अ प्लीथोरा ऑफ कंप्लेंट्स came from the students, so that will be plethora. Affront, effrontery दोनों दे आर सिमिलर साउंडिंग. अफ्रंट हो जाता है कुछ भी इंसल्टिंग वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज अफ्रंट. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं आपसे, द सन रिफ्यूज टू डू द वर्क एंड मदर टुक इट एज एन अफ्रंट. मदर ने उसको एक इंसल्ट के तौर पे लिया. इंसल्टिंग जेस्चर और रिमार्क. एफरेंट्री हो जाता है हमारे पास जिसमें कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस दिख जाए या टू मच बोल्डनेस दिख जाए. सो टेमरिटी या रैशनेस, दैट इज एफरेंट्री. शेमलेस बोल्डनेस. सो फॉर एग्जाम्पल, again, when the children they refuse to do what the parents do, that is generally considered an effrontery by the society. तो अब तो ज्यादा ऑप्शंस बचे ही नहीं हमारे पास. ए बचा है और बी बचा है, बस तो वही दोनों में हमें लिखना है. तो तब आप बता ही सकते हो व्हाट इज पर्डिशन, व्हाट इज लेवियथन, इन दोनों में से ए और बी में से. पर्डिशन हो जाता है जो हम बोलते हैं नरक या नरक की आग, दैट इज पर्डिशन. सो दैट विल बी बी. Eternal damnation, inevitable self-destruction, hellfire. So almost all the religions, they tell us that if we do not spend our life here on earth in a proper way, in a pious way, then we will be sent to perdition. We will be sent for hellfire. Eternal, हमेशा के लिए, damnation, कि हमेशा के लिए अब वहां पे आपको पकड़ के रखा जाएगा and you will be punished there. Leviathan हो जाता है फिर obviously A. A huge and immovable thing or animal, usually powerful. It could be an animal, it could be a thing as well. Huge and powerful thing, that is Leviathan. So, for example, the small bear cub grew out to be a Leviathan in just 2 years. क्या स्कोर रहा यहाँ पे? कहीं पे कुछ डाउट, कोई सा मीनिंग क्लियर नहीं हो तो लेट मी नो. Quickly check. Again, try to make a sentence quickly. चलिए, तो now you have to answer just yes or no for these. You have to check कि यहाँ पे if you remember the meaning, तो then you can easily tell me whether it is yes or no. सिर्फ yes or no में आंसर देना है इसका.
Okay, let us check. The accused screamed at the judge, "You are the most corrupt judge ever." And anathema. Anathema is used to describe something that you extremely dislike. An anathema on the judicial system. तो ये है जो accused ने he shouted. So can this be called profanation by the accused? कैसे हम profanation बोलेंगे? Yes. This is profanation. He is hurling abuses. So first is yes. Second, the police arrested 12 teenagers for vandalizing. Vandalizing to destroy or damage cars at night. Are these teenagers miscreants? क्या होगा? Yes or no? Miscreants क्या देखा हमने अभी? Miscreants जो कि those who are involved in antisocial activity. So yes, they are certainly miscreants because they have vandalized the cars. Once you enter the world of crime, it sucks you deep inside and you become helpless till you eventually drown to your end. Can a criminal life be called maelstrom? Yes, it can be called a maelstrom. भंवर में फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो it is. The movie premiere was to be attended by all big celebrities, and despite heavy rains, almost everyone reached the premiere. Will you call this a fiasco? Yes or no? What is fiasco? Fiasco is a complete failure. But यहाँ पे क्या हो रहा है? Heavy rains के बावजूद almost everyone reached the premiere. So that means it was successful. It was not a fiasco. A particular political party has never lost elections in a particular parliamentary seat. Can you say the seat is the bastion of that political party? What is bastion? Stronghold of a person or a thing. तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या? ये वहां पे उस पॉलिटिकल पार्टी का आप गढ़ बोलोगे क्या इसको? यस, इट इज. So 1, 2, 3, yes, 5, yes, and fourth, no. Only fourth, no. Rest of them, yes. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Again, quickly identify whether it will be a yes or no for these. यहाँ पे क्या होगा? 10,000 people have applied for a job that is having just 12 vacancies. So, is this a plethora? Is this an excess? Yes. इसी को हम बोलेंगे excess. So, this is a yes. When asked to apologize to his older sister, the young child spit in the face of his grandmother and ran away. Will you call this as an affront? क्या आप इसे एक insult मानोगे? Yes, certainly. So second is also yes. You people can also participate. You can send your answers. The boss screams at his wife, his driver, his office staff, even his dog. सब पे चिल्लाता है वो. Would you say the boss is prone to effrontery, prone to doing insulting others? He is not even leaving his dog. So yes, he is prone to effrontery. First, you take the drugs, then the drugs take you and take everything from you, including your life. Can we say that drugs are perdition, eternal damnation? एक नरक है वो. तो ड्रग्स को क्या हम नरक बोल सकते हैं? Yes. हमेशा के लिए परेशानी because you are not able to come out of it. Because they are taking everything from you, including your life. For the last 30 years, Mr. Suresh Kalmadi has occupied the position of the president of the Indian Olympic Association. Will you call Mr. Kalmadi a leviathan, a giant? Yes, he is a giant of Indian Olympic Association. 30 years say he is in this position. So again, yes.
कहीं कुछ डाउट हो तो वी आर इन अ लाइव सेशन, यू कैन आस्क मी. And now let us move on to the next part. Quickly check out some people idioms. इनमें से किस किस के मीनिंग्स आपको पता है? कल्चर वल्चर, ईगर बीवर, family man, company man, go getter, jack of all trades, man of his word या women of her word, man of straw, and armchair critic. Do you know these? जल्दी से हम देख लेते हैं इनके मीनिंग्स. कल्चर वल्चर हो जाता है हमारे पास someone who is deeply interested in this literature या फिर arts, इन सब के अंदर थिएटर म्यूजिक उसमें किसी का इंटरेस्ट होता है उसे बोलते हैं हम कल्चर वल्चर. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू आर्ट गैलरीज एक्सेट्रा यू आर अ कल्चर वल्चर. एक मीनिंग ये हो जाता है. एक और मीनिंग हो जाता है कि जब कोई डिसऑनेस्टली कल्चर का नाम पे कुछ बेनिफिट उठाना चाहता है, ही इज नॉट ऑनेस्ट. जैसे कई बार हो जाता है दिस religious organization in the name of religion they start पनिशिंग अदर्स, तो वो हो जाता है हमारे पास, उनको भी हम कल्चर वल्चर्स बोलते हैं. तो a person or organization making profit using dishonorable practices from a culture they do not care for. Political culture vulture. So ढेर सारे एग्जांपल्स वहां मिल जाएंगे आपको इसके पॉलिटिक्स के अंदर. ईगर बीवर. हु इज एन ईगर बीवर? कोई अगर बहुत ही ज्यादा जोश से कुछ काम कर रहा हो तो उसको बोलते हैं हम ईगर बीवर. A keen and enthusiastic person who works very hard. So you people should be eager beavers trying to go to uh, become the judge. So students were buzzing and there was a long queue of eager beavers waiting for their turn. I'm giving you the sentence also ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके. Family man. Now who's a family man? Clearly you can see family man, in fact family women also. Person who gives importance to his family, who spends time with his family is a family man. So ideally all of us should be family man. We should not be just working, we should be spending time with family as well. तो उसके ऑपोजिट अब कंपनी मैन, तो आप बता ही सकते हो कि हु विल बी अ कंपनी मैन? कंपनी मैन who gives preference to his company, who spends too much time on his company. So that will be a company man. They say poor Ryan, his girlfriend of 6 years, dumped him because he seldom spent time with her. He was always at work. What a sad company man. Do you know any company man around you? गो गेटर हो जाता है अगेन ये सेल्स के अंदर या स्पेशली जब जॉब्स निकलती हैं तो आप देखोगे दे नीड गो गेटर्स जिनके बस कामयाब होना ही है. दे आर वांट टू गेट सक्सेस, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड टू गेट सक्सेस, चाहे कितनी भी उनको सामने परेशानी आ जाए. सो दैट इज गो गेटर. सो यू नीड टू हैव अ गो गेटर एटीट्यूड इफ यू वांट टू बी अ गुड सेल्समैन. या जैसे यहां पे दिया हुआ है, वी ओनली रिक्रूट गो गेटर्स हु विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंपनीज डेवलपमेंट. चलिए, तो हु इज बेटर यहां पे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन. मास्टर ऑफ नन या मास्टर ऑफ वन, क्या चीज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए? जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जहां से आप समझ सकते हो समवन हु नोस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, सो दैट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. क्या आपको ये काम भी करवा दो, ए काम भी कर सकता है, बी काम, सी काम आप बोलो वो कर लेगा. सो शुड इट बी जैक ऑफ ऑल, सभी का थोड़ा थोड़ा आता है, या मास्टर ऑफ वन? रियल लाइफ में व्हाट डू यू थिंक, हु इज मोर इंपॉर्टेंट? A man of his word या women of her word?
मतलब वादे का पक्का, जो बोल दिया वो कर दिया। यू कैन ट्रस्ट हिम, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। या अगर हम देख लें तो पॉलिटिक्स में यू विल जनरली, the politicians they claim that they are a man of their words, but actually you will see that it is the contrary, which is the reality. So उनके लिए क्या वर्ड हो सकता है? उनके लिए हो सकता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। हु इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ? अब स्ट्रॉ मैन हमारे पास क्या हो जाएगा? मतलब ये सिर्फ दिखावे का, एक्चुअल में ये कुछ नहीं कर सकता है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ भी बस दिखने में आपको दिख रहा है, बट विदाउट एनी सब्सटेंस, विदाउट एनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। वो कुछ भी बोलेगा लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो कि ये बोल रहे हैं तो ऐसा है। दैट इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। द लास्ट वन, आर्म चेयर क्रिटिक। हु इज एन आर्म चेयर क्रिटिक? ये हमें रियल लाइफ में ढेर सारे लोग मिल जाते हैं हु आर आर्म चेयर क्रिटिक्स। आर्म चेयर क्रिटिक्स उनको बोलते हैं आर्म चेयर पे बैठे हुए हैं और वो क्रिटिसाइज किसी को कर रहे हैं, मतलब खुद तो कंफर्टेबल पोजीशन में और क्रिटिसिज्म दूसरे का कर रहे हैं। तो ये उसके लिए बोला जाता है कि द पीपल हु डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बट दे गिव देयर ओपिनियन एज इफ दे आर एक्सपर्ट्स ना। ये आपने देखा होगा ढेर सारे रियल लाइफ के अंदर, इसके भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। Mandeep, yes, ये जुडिशरी की क्लास है। वी आर डूइंग वोकेबलरी रिलेटेड टू अपने एमपीसीजे। यू हैव दैट वोकेबलरी पार्ट ऑल्सो, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड नाउ, दिस वाज द लास्ट वन। मनदीप थोड़ा सा लेट आए शायद आप। सो दीज वर पीपल इडियम्स। तो यहीं पे आई विल एंड। कोई सा अभी भी वर्ड क्लियर नहीं हो, इडियम क्लियर नहीं हो, तो डू लेट मी नो, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। तो आई होप यहां से आपको एक ये तो पता चली गया होगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। अभी कितनी आपकी, कितने सारे वर्ड्स मैंने डिस्कस किए, उनमें से कितने आपको पता थे, तो हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, ना। कैसे करना है वोकैबुलरी प्रिपरेशन? ये पिछली क्लास जो थी वोकैबुलरी की, देयर आई डिस्कस्ड इन डिटेल वेरियस वेज, निमोनिक्स और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। रिवीजन कैसे किया जाए वो सब किया था। सोर्सेज जो हैं वो सब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। ठीक है। So, all the best for your MPCJ exam, and as such, any other judiciary exam that you are giving. I hope you will be getting benefit from this. We'll be meeting again, again on some different topic, some different questions that I will be bringing for you. Till then, take care. Goodbye.